Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we have completed unit number 1 and today we will start unit number 2, cultures. I have given you a complete introduction of this unit and today we will start the first lecture of culture. So my dear students, the objective that will be attained or you by the end of this lecture, all the students will be able to define culture and its components. ठीक है, आप इस यूनिट इस लेक्चर के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफ़ाइन कर सकेंगे कि कल्चर क्या होता है और आप ये भी बता सकेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. सो द स्किल्स दैट विल बी डेवलप्ड आर अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस and recognition. So my dear students, now is time for an activity. Let's have a look. आपको ये मैप नज़र आ रहा है. Can you recognize the map? ये कौन से कंट्री का मैप है? Map of पाकिस्तान. Very good. So my dear students, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ लोग नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इस मैप के अंदर. Why is it so? ये मैंने पिक्चर्स इस तरीके से लगाई हैं. Basically, this is called the cultural map of Pakistan, which is also written here. ठीक है? दिस इज़ द कल्चरल मैप ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में या उसके मुख्तलिफ प्रोविंसेस में आपको डिफरेंट कल्चर्स नज़र दिखा रहा है. लेट मी पॉइंट इट आउट हियर फॉर यू. दिस एरिया शोज द कल्चरल मैप ऑफ बलूचिस्तान. ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो बलूचिस्तान में किस किस्म के कपड़े पहने जाते हैं वो नज़र आ रहे हैं. देन दिस पार्ट शोज द कल्चरल map of Sindh. This shows the cultural map of Punjab, and this is the Gilgit-Baltistan, and this is Khyber Pakhtunkhwa. This is Kashmir. So this is how the different parts of the map of Pakistan shows the different cultures. यानी कि इसका ये मतलब है कि हर सूबे में मुख्तलिफ कल्चर जो है वो अपनाया गया है या मुख्तलिफ तरह की जो लोग हैं वहाँ पर रहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सो देयर आर 5 कल्चरल कंपोनेंट्स. लेट्स हैव अ लुक. पहले तो आप कुछ पिक्चर्स देखें. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से जो है 5 कंपोनेंट्स हैं कल्चर के. दीज फर्स्ट इज द सिंबल्स व्हिच इंक्लूड्स द फूड, ड्रेसेस, आप का खेल वहाँ पे किस तरह का आप खेलते हैं, दैट इंक्लूड्स द सिंबल्स ऑफ अ कल्चर. देन कम्स द लैंग्वेज. हर सूबे में मुख्तलिफ लैंग्वेज बोली जाती है. पंजाब में पंजाबी, सिंध में सिंधी, बलूचिस्तान में बलोची, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो, एंड देन इन कश्मीर इट इज़ कश्मीरी. सो मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं वो बोली जाती हैं. देन कम्स द वैल्यूज़. हर कल्चर जो है उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ बिलीव्स होते हैं और मुख्तलिफ नॉर्म्स होती हैं. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल on your reading pages. So my dear students, now identify the following. आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आएंगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कल्चर से रिलेटेड हैं. ये कौन सा कल्चर शो कर रही है पिक्चर आपको? पंजाबी कल्चर. वेरी गुड. And a turban with waistcoat. This man shows, this is Balochi culture. Very good. और फिर आपको कुछ फूड नजर आ रहा है. चप्पल कबाब कहाँ पर खाए जाते हैं? खैबर पख्तूनख्वा. वेरी गुड. एंड देन कम्स आपको एक खेल नजर आ रहा है, पोलो. कहाँ पर खेली जाती है ये? गिलगित बल्तिस्तान. वेरी नाइस. एंड फोक म्यूजिक फेस्टिवल ये किधर सेलिब्रेट किया जाता है? सिंध में. वेरी नाइस. आपको इनके ड्रेसेस से भी आइडिया हो रहा होगा, अजरक पहनी हुई है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. ओ मैनकाइंड, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन एंड अदर. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. So my dear students, अल्लाह ताला ने हमें जोड़ों की सूरत में पैदा किया है. इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे ट्राइब्स बनाए हैं.
जिस तरह से आपके मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, इसी तरह से ट्राइब्स होते हैं, मुख्तलिफ कबीलों के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है ताकि इंसान जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को जाने। और अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल करने वाला है और बेहतरीन इखलाक वाला है। So my dear students, let's quickly refresh your knowledge. To which culture do you belong? For example, I belong to Punjabi culture. Quickly tell me, to which culture do you belong? Very good. Now quickly tell me, in which province do you live? For example, I live in Punjab. Very nice. What is your cultural language? My cultural language is Punjabi because I live in Punjab. So here everybody around me speaks Punjabi mostly. Very nice. From here we will move forward towards your reading page. Quickly open page number 23 in your books. I hope everybody has opened page number 23. So my dear students, now we will start the reading. Quickly put your fingers where I will read. Culture. Culture refers to the ways of living. It is the set of behaviors and beliefs of a particular social group. It is built by a group of people and transmitted from one generation to another. The following components of a culture are. So my dear students, एक culture जो है वो आपके रहने के अंदाज को जो है दिखाता है, ठीक है। So basically आपकी जो culture की definition है वो ये है, culture refers to the ways of living, ठीक है। आप किस तरीके से रहते हैं, that is called your culture, ठीक है। और आपके किस तरह के behaviors होते हैं वो show किए जाते हैं, आपके क्या beliefs हैं, social group में आप किस तरीके से उठते बैठते हैं, these all are known as, this is known as culture. और ये जो कल्चर है ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। हमारे आबाओ और अजदाद का भी यही कल्चर था, आगे हम भी जो है वो उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर। सिंबल्स। Symbols. Some symbols become the identity of a specific culture. It can be recognized by the people who share the same culture. For example, dress, food, crafts, and architecture. So, what are the symbols? ये आपकी identity होते हैं और एक specific culture की ये identity होते हैं, जैसे कि उसका dress, उसका खाना, उसके crafts यानी कि किस तरह की जो है वो क्राफ्ट जो है वो पंजाब में है, किस तरह का आर्ट, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो आर्किटेक्चर होता है, बिल्डिंग्स किस तरह की बनती हैं, हर कल्चर में मुख्तलिफ तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्चर और इसको हम कहते हैं सिम्बल्स ऑफ दैट कल्चर। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द लैंग्वेज। इट इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन among people. The people in the world cannot express themselves clearly without language. It helps to transfer culture to the next generations. So my dear students, जब आपको अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी होती है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है और हर कल्चर का जो कम्युनिकेशन है वो उसकी ज़बान होती है और हर जो कल्चर है उसकी ज़बान जो है वो मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल पंजाबी कल्चर स्पीक्स पंजाबी, सिंधी स्पीक्स सिंधी। सो दिस इज़ कॉल्ड द यानी कि कल्चरली हमारी लैंग्वेजेस जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। देन कम्स द वैल्यूज़। द वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी आर अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। एक जो सोसाइटी है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। Our values are things that we deem important and can include concepts like equality, honesty, education, effort, loyalty, faithfulness, conservation of environment, cleanliness, etc. From our beliefs, we derive our values, which are either correct or incorrect when compared with evidences. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की तो उसमें आ जाती है हर कल्चर में मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं।
लेकिन बेसिकली वैल्यूज़ क्या होती हैं कि आप एक दूसरे को इक्वालिटी से ट्रीट करते हैं कि नहीं, ऑनेस्टी, एजुकेशन, देन एफर्ट, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ये सब जो है ये आपकी वैल्यूज़ शो करती हैं। और हर कल्चर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे। देन कम्स द बिलीव्स. Beliefs are the convictions that are generally held to be true, usually without actual proof or evidence. They are often connected to religion. Religious beliefs could include a belief that Allah is alone and created earth. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिलीव्स जो है बेसिकली ये जो है वो रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारा बिलीफ जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह ताला एक है और इस दुनिया के या इस दुनिया को बनाने में इस कायनात के खालिक भी हैं। सो दीज आर कॉल्ड बिलीव्स। सो ये रिलीजियस वाइज वेरी भी कर सकते हैं। देन कम्स नॉर्म्स. Norms are the rules or standards of a society. Every society has some norms. They live according to these norms. It includes rituals, taboos, and folkways. For example, celebrating the Mehndi function is a norm set by the people. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं या जो डिफरेंट आपके कल्चरल फेस्टिविटीज़ होती हैं, दे आर कॉल्ड योर नॉर्म्स. जैसे कि मेहंदी जो है इट इज़ अ नॉर्म, पंजाब में भी सेलिब्रेट की जाती है, मुख्तलिफ एरियाज़ में सेलिब्रेट की जाती है. इसको सेलिब्रेट करने के तरीके जो हैं वो वेरी कर सकते हैं कल्चरल वाइज. सो दीज आर कॉल्ड नॉर्म्स, जो आप अपने फेस्टिवल्स को या अपने मुख्तलिफ त्यौहार जो हैं उनको मनाते हैं. So my dear students, these are the 5 symbols of cultures. So then comes the wrap up. People's behavior, beliefs and ways of living is called culture. The components of culture are symbols, language, values, beliefs and norms. So my dear students, now is the time for worksheet. You can download this worksheet from the description box below, and you can also get this worksheet in print form by your teacher. So my dear students, components of culture, fill in the given bubbles by giving the example of each component of culture. ठीक है, आपको यहाँ पर 5 components जो है वो culture के दिए गए हैं, आपको हर किसी की example देनी है. For example, symbol. Let me do the first one for you. So symbol में आ जाएगा food, dress, crafts. So these are the examples of symbol. Then comes value, language, beliefs and norms. आप one by one जो है सबको fill करेंगे. It's easy. So my dear students, now is the time for your homework. Quickly note down your homework given on page number 23, home activity number 1. Can a society survive or flourish without culture? Give a reason for your answer. क्या जो एक society है वो cultures के बगैर जिंदा रह सकती है? Yes or no? You also have to give the answer for your reason for your answer. Then on page number 32, you have to give the answers of question number 1, 2, 3, 4 and 5. Define culture and write the name of your culture. What are symbols? How language promotes culture? List the components of culture. Norms are the standards of a society. Justify the statement. ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक. देन ऑन पेज नंबर 32, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर. वेरी इजी, आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करना है. प्रीवियस जो थे वो ब्रीफ आंसर करना था आपको. Okay, my dear students, now in next lecture we will we will study about diverse cultures of Pakistan. We will study in specific about Punjab and KPK. So my dear students, अब हम one by one तमाम cultures को in detail में पढ़ेंगे next lectures में. अभी हमने just जो है वो basic study की है about the cultures कि उनके 5 components कौन से होते हैं और कैसे जो है उन components की basis पे जो है वो cultures vary करते हैं. So my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.